लिखिएगा नेक्स्ट। थर्ड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। In carboxylic acid, you will write when carboxylic acid is reduced using lithium aluminium hydride, it converts to 1 degree alcohol with same number of carbon atoms. RCOH presents with lithium aluminium hydride, it will get converted to RCH2OH. Okay? So if you have this type of diagrammatic representation, then RCH2H. The main thing is that wherever the carboxylic acid is present, that will be getting converted to CH2H. So if you have, let us suppose something like this. For example, you have COOH, then this will be converted to, in the presence of lithium hydride, this will be converted to 1, 2, 3 carbon atom and then the OH. Okay? This is the right answer. Most of the students, they will write it like this. Carboxylic acid को alcohol में convert कर दिया. But what you need to remember is that number of carbon atoms should also be same. Secondly, if you have something cyclic, then make everything as it is. Same lithium aluminum hydride. Make everything as it is. In the place of COOH, it should be CH2OH. ठीक है? थर्ड एंड फोर्थ आप लोग कीजिएगा. Send the answer on my WhatsApp.
Khadija, I'm waiting for your answer. हाँ, समथिंग इज, थोड़ा और दिमाग लगाइए फोर्थ वाले में, या यू आर मिसिंग समथिंग. हम्म. Khadija, I'm waiting for your answer. Explain it. Yes, Khadija. Do it. I'm not What getting happened? I it. cannot hear you. I'm not getting it. अच्छा, चलिए बताइए. Instead of CH, we should add what? COOH will be replaced by. बोलिएगा तब तो आएगा खदीजा. COOH will be Yes, replaced sir. by what? Will be replaced by. CH2OH. Once again. CH2OH ना. See what, that's what happening, right? Now बोल Yes, बोल के sir. कीजिए अब. Like everything as it is, है ना? This R is as it is. ठीक है. Yeah. Yeah, correct. अब करके हमको भेजिए जरा खदीजा. आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या खदीजा? No, sir. क्या हुआ है आपको? Throat pain. सॉरी व्हाट? Throat pain, sir. अच्छा ठीक है, ज्यादा मत बोलिए फिर तो. Yes, sir. Khadija, I'm waiting for your answer. Hopefully, it should not take too much time now. COH should be replaced by CH2OH. Khadija, are you sending the answers? Khadija?
What happened, Khadija? Can I get a reply at least? Yeah, ये तो बताइए. Are you sending the answers, Khadija? Yes, I'm sending. जी भेजिए. ठीक है, वेरी गुड. यहाँ तक आपने सही किया जितना आपको बताया गया था, है ना. बट अब देखिए जरा, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, सी द फर्स्ट वन इज करेक्ट, द थर्ड वन इज कंप्लीटली करेक्ट. But in the second one, you can see that this ketonic group will also be, here also we have lithium aluminum hydride. So this ketonic group can also be converted to OH. है ना? You must have learned this in the method of preparation of alcohols from carboxylic acid case में, CH2OH. Sorry, not from carboxylic acid, from carbonyl compound. So carboxylic acid gets converted to CH2OH, and ketone gets converted to the double bond of O of ketone gets converted to OH. ये याद है आपको? कुछ याद आया ऐसा? बताएं. यस खदीजा, कुछ याद आया ऐसा? नहीं याद आया? मे बी इफ यू रिवाइज यू विल गेट इट. ठीक है, चलिए, राइट अ नोट. Sodium borohydride and H2 in the presence of nickel or Pd or Pt do not convert carboxylic acid to CH2OH. So for example, here we have double bond O, here we have CHO, here we have carboxylic acid. Here we have sodium borohydride and COOH. Again, so sodium borohydride, here we have three things. We have ketone, we have aldehyde, and we have carboxylic acid. Sodium borohydride can convert the aldehyde to ketone, sorry, aldehyde to alcohol. The aldehyde will also be getting converted to alcohol like this, but the carboxylic acid will be intact. It will not be getting converted to alcohol because sodium borohydride cannot convert a carboxylic acid. It can convert aldehyde and ketones, but not carboxylic acid. ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन के लिए थोड़ा ध्यान से रखिएगा. अब दूसरी चीज ये है, lithium aluminum hydride is a quite expensive reagent. So what do we do? Please see, since lithium aluminum hydride is expensive, the carboxylic acid is converted to ester, and on further catalytic hydrogenation, it gives alcohol. So we have carboxylic acid. We will convert it to ester by reacting this with some other alcohol, ROH. We'll get R, C double bond O, O R dash. And once we react this with H2 in the presence of nickel, we'll get R, CH2OH. So basically we are getting this, we use lithium aluminum hydride, but lithium aluminum hydride, it is very expensive. That is why
what we do, we convert first of all it to ester, and फिर उसके बाद सस्ती चीज, that is hydrogen in the presence of nickel, we easily do this particular reaction. Although the ester that we have, RCOR, can also be converted to RCHOH using lithium aluminium hydride, है ना? This can also be used, but since lithium aluminium hydride it is very expensive, we don't use that, है ना? इसमें क्या RCH2OH plus you will get one more compound, that is R-OH. We are going to get two compounds, you know, both of these are alcohols only. Now this is coming from the carboxylic acid, not carboxylic acid, from the, छोड़िए, ये वाला जो portion है, let me color it differently so you will understand. So this is red part. This red part is coming from this part. RC double bond O से आ रहा है, and this other white part is coming from this R dash 2. ठीक है? One more point you will write is that sodium borohydride can't convert esters to alcohol. Copy this down. उसके बाद फिर एक ओवरऑल टाइप का हम आपको ये बताते हैं, एक रिएक्शन we are going to do, one reaction, and that will give you an idea about the different reagents. Raise your hand once you're done. Just waiting for Khadija. Done. ठीक है, देखिए सवाल हम दे रहे हैं, बस सवाल से ना आपको घबराना नहीं है, बस, है ना? The molecule is going to be a very large molecule, but it doesn't matter. What we need to see is always the part that is reactive part. Here we have, let us suppose, benzene ring. अभी मत बनाइए कंपाउंड को, let me make the compound and then you will make it, okay? Here we have double bond O. Here we have OCH3. अब इसको ना तीन रिएजेंट से हम लोग रिएक्ट करवाएंगे. The first one is sodium borohydride. The second one is H2 in the presence of nickel. And the third one is lithium aluminium hydride. Now, here we have a few different compounds here, not few different compounds, rather few different groups. So this first one is ketonic group. This second one, if you see this whole thing, this is ester. Now this is the third group, which is aldehyde. This is the fourth group, which is carboxylic acid. अब इसमें बात ये है कि sodium borohydride, what are the? So here we have four groups, right? Now what are the groups which can be converted to alcohol? Just neither. So sodium borohydride can only convert 1 and 2. Aldehyde and 1 and 2. No, 1 and 3. My bad. Aldehyde and ketones 1 and 3. So everything else will be as it is. The benzene ring will be as it is. यही तो खूबसूरती है. Like you have to identify what will get reacted, and then everything is going to be as it is. Now will be getting converted to alcohol. So this is CHO. This carbon atom is getting converted to alcohol. Here you get OH. This carboxylic acid is going to be as it is. This is not going to change.
This ketonic group will be getting converted to OH. Then we have the ester group, which is not going to get converted to anything. It will be as it is OCH3. When I look at H2 and nickel, then this can convert the ketone, the aldehyde, that is third one, and it can also convert the ester, that is the second one. It cannot convert the carboxylic acid to alcohol. So here we have benzene ring like this. This is getting converted to OH. Then this is also getting converted to OH. The CHO is going to get converted to OH, but the carboxylic acid will be as it is. Now, what about lithium aluminum hydride? Lithium aluminum hydride can convert all of these four different functional groups to what? To alcohol. To alcohol. OH, 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 and OH. Or rather, I should do it like this. Check. Copy this down. Raise your hand once you're done. खदीजा, आपको समझ में आया या सिर्फ आपने कॉपी कर लिया? खदीजा, Yes, sir. आया ना? ठीक है. So Yes, practice sir. this question whenever you are getting, because ये मॉलिक्यूल भी बड़ा है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, हम इतना बड़ा मॉलिक्यूल कर ले रहे तो छोटे मॉलिक्यूल की क्या ही बात है. यही है आपका, हो गया? नहीं सर. अच्छा, कॉपी कर लीजिए आराम से. Done. Done. ठीक. Right, the fourth one. Haloalkanes. From haloalkanes. Now we have seen this reaction in the haloalkane halorine chapter. If you have some haloalkane like this, and you react this aqueous NaOH or KOH, or add water to it, all of these reagents is going to give you alcohol. Okay, all of these are going to give you alcohol plus some. There will be obviously some byproduct. ठीक है, बट आपको ये समझना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव haloalkane like this, let us suppose ethyl bromide in the presence of aqueous NaOH, you will get Br will be replaced by OH.
You have Cl like this. Aqueous KOH. Cl will be replaced by OH. Assalamu alaikum, Siddiqa. How are you? Assalamu alaikum, sir. I'm good. How are you, sir? I'm good. I'm good. Alhamdulillah. You were attending the classes, Siddiqa? Yes, sir. I was attending the classes. Pura? Yes, sir. I It only missed the beginning few classes. Two, I think. ओके. अच्छा, हाफ ईयरली हो गया आप लोग के? खदीजा, सिद्दीका, यही हाफ ईयरली तो हो गए होंगे ना आपके? जी सर. अभी No, रिसेंटली sir. या फिर अच्छा, हाँ सिद्दीका बताइए. Mine is starting next week. वीक, ओके. यही आपका कब हुआ? मेरा सर पिछले वीक ही हुआ. नहीं, एक्चुअली ये वीक खत्म हुआ. पिछले वीक केमिस्ट्री हुआ. कैन यू सेंड द क्वेश्चन पेपर्स? कैसा गया वैसे आपका? क्या सर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में मिस्टेक्स हुए बस. किसमें? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री. अच्छा, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में. अच्छा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में. वो चैप्टर में ज्यादा मिस्टेक्स हुए. उस चैप्टर में मिस्टेक, वो चैप्टर में जी सर. वी आर डन विद दैट चैप्टर ना भाई? यस सर. अच्छा, क्या मिस्टेक हो रहे थे? अच्छा, सेंड मी द पेपर, है ना? सेंड मी द पेपर. खदीजा, व्हाट अबाउट यू? आपके हो गए एग्जाम? Yes, sir. पेपर मिल जाएगा हमें? Okay, I'll send it. ओके, थैंक यू. यहाँ पे बस नोट लिख लीजिएगा. सिद्दीका, व्हाई आर यू लेट? Sir, I have a little fever. You have fever. Yes, sir. So, आपको शुक्र है. 3-degree haloalkanes gives a mixture of alcohol and alkene on treatment with aqueous KOH or NaOH. Therefore, it is not a preferred method of preparation of 3-degree alcohols. Okay. अरे ये क्या आपने सही से भेजा है ना? ऐसे उल्टा सीधा नहीं भेजा कहीं हमने, वो नहीं सही से भेजा है. ठीक है. अरे यार, ये जो सर्कल किया हुआ आपने, ये सब गलत हुए हैं आपके. यही है हाँ सर. हाँ. यार. बताओ भाई, ये तो मतलब क्लास के क्वेश्चन सब हैं? नोट्स में मिल जाएगा आपको तो. कैसे चलेगा? तैयारी नहीं सर की थी क्या आपने? सर थोड़े उसमें ये सारे सर्कल है तो उसमें से बस थोड़े रॉन्ग है बस. क्या सर्कल? सर्कल करा हुआ उसमें से 9th वाले का रॉन्ग है और 9th वाले का रॉन्ग है और मुझे फर्स्ट और सेकंड में डाउट था. कोऑर्डिनेशन आइसोमर के बाद कहाँ गया? लिंकेज आइसोमर देखिए, NCS CSN जब भी आ जाए. खैर ठीक है, तो कोई बात नहीं. ऑल ऑफ यू रोट दिस नोट, यस और नो? मैं लिखा हूँ. आप लिख रहे हो?
waiting for you here. फिर में लिखिएगा from aliphatic primary amines. So aliphatic primary amines is basically R CH2 nitrogen with two hydrogens. And there is a reason why I'm making this compound completely, and I'm not writing only the formula here. When you react this with ONO, nitrous acid is prepared by the mixing of NaNO2 and HCl. So you get here R, CH2, NH2 is being replaced by OH, plus you get N2 gas, plus you get water H2. तो यहां से होता क्या, ध्यान से देखिए जरा, ONO जो है नाइट्रस एसिड, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा OH N एंड फिर O, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सही है। नाउ द कार्बन इट गेट्स कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से कनेक्शन हो जाता है, एंड ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। कैन यू सी दैट? यस और नो प्लीज टेल मी। Yes. Yes, याद sir. रखने का तरीका, सिंपली if you have any amine or primary amine and you react this with ONO, nitrous acid, HNO, the NH2 will be replaced by OH. NH2 will be replaced by OH, that's it. Everything will be as it is. NH2 is replaced by OH. It is once you're done. नेक्स्ट लिखिएगा entropy of phenols. Measure of preparation of phenols. चार प्रिपरेशन आपको याद करने, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दी reagents and the starting material. आपका बनेगा तो फिनॉल, फिनॉल के अलावा कुछ और नहीं बनेगा ना। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट अच्छा ये कंपाउंड लाइक दिस, इफ द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस और इफ द स्ट्रक्चर इज लाइक दैट, देन व्हाट विल हैपन, वेयर द OH विल गो। सीधा फिनॉल बनेगा, आपको स्टार्टिंग मटेरियल्स याद रखने हैं बस, दैट्स इट। तो द फर्स्ट वन इज फ्रॉम benzene sulfonic acid. From benzene सल्फोनिक एसिड। मेरे हैंडराइटिंग को पता नहीं क्या हो गया। बेंजीन रिंग, अच्छा, हाउ विल वी गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड? उसके लिए भी ध्यान से देखिए। वी हैव बेंजीन, यू विल स्टार्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4, एंड यहाँ पे आपके पास ना SO3 गैस के फ्यूम्स मिलते रहेंगे, एंड दिस होल कंपाउंड, दिस होल थिंग, इट इज नोन एज ओलियम। We call it also fuming H2SO4. H2SO4 acid, इससे धुआं निकलता है, इतना concentrated H2SO4, fine. In from which you are getting the SO3 gas coming out from the beaker and container. This will give you benzene sulfonic acid, which has structure in which benzene ring it is connected to SO3H.
Benzene ring is connected to SO3H. Once you add NaOH here, and heat it a bit, you will get sodium phenoxide. Benzene ring is connected with ONA. Add H plus and water, you will get phenol. So when you add NaOH and heat it, now, then obviously you will get sodium phenoxide because we have a basic condition, and the phenol, the OH atom, sorry, the H atom of phenol will be hydrolyzed and it will be replaced by Na. Now we are starting with benzene here. नाम लिखते जाते हैं सबका. This is benzene. This is benzene sulfonic acid. This is sodium phenoxide. This is phenol. Write the second method of preparation from haloarenes. All of you done now? Is there anyone who is still writing? Siddiqa, are you writing? Yes, sir. अच्छा, No, खदीजा, sir. you're right. तो खदीजा आपका तो हैंड रेज्ड है. वाह, हाथ आप नीचे करके रखे ना. फिर if you're writing, please lower your hand. Done, sir. यही लिख लिया आपने? Yes, sir. ठीक है. See, from haloarenes, you must have learned this reaction in the haloalkane halorene chapter, that if you have, let's suppose, chlorobenzene, then in drastic condition, aqueous NaOH, 623 Kelvin, 318. H plus in the presence of H2 in the second step, the chlorine will be replaced by OH simply. Sir, याद करना पड़ेगा क्या values? It's better, obviously, it is better to remember the values of 623 and 318. बहुत ही आसान है. 623 कैसे हमने याद किया था? 6, we have 6 carbon atom in the benzene ring. There are 3 pi bond and 3 2s are 6. ऐसे याद कर लिया हमने. And 318 भी ऐसे तो उसी से याद हो गया. ठीक है? तो whenever you are writing this particular reaction now, while revising, अच्छा revise करने time don't read the reaction. It is of no use. What least you can do is write the reaction. ठीक है? Or if you are reading the reaction, then once you read it, you write that down, write the reaction down 1 time, 2 times, 3 times, without looking at the reaction. अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो पढ़िए उसको इतनी अच्छी तरीके से that you can rewrite the reaction without looking at it. ठीक है? And but again, I would say that don't read it. Always try to write it. And then if you're done like revising a particular set of reactions, then after 1 hour, try to remember or recall all the reactions by writing it. Because test में तो वही होना है ना, आपको recall ही करना है. तो कितना पढ़ते हैं आप, like how much you can read in a one day. The test is not about that. How much can you retain and how much can you present in the answer book? That is what is required for the examination. तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा. ठीक है ना? प्लीज, हम तो बोलेंगे पढ़ने पे बहुत ज्यादा टाइम दीजिए ही मत. ट्राई टू रिटेन मोर एंड मोर, ट्राई टू रिमेंबर मोर एंड मोर रिएक्शन. आपने एक बार पढ़ा, 1 घंटे के लिए कुछ भी और कर लीजिए, उसके बाद 1 घंटे बाद याद कीजिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए.
that try to remember, try to think about that page. What was the first reaction? How it looked like? And if the mind will have a certain image of that particular page, whatever you are reading. जो आंसर आपको याद बहुत अच्छे तरीके से ना in the examination, the answer that you remember very nicely, you will have a photograph of that answer in your head. You will remember that the answer was on the right in the bottom section or in the top section of the right page. होता है ऐसा, हाँ या ना बताएं? The answers that you remember very nicely. Yes, sir. Yes. है ना? यही तो होता है. अगर कोई आंसर बहुत अच्छे से याद है तो आपको वो पेज में याद रहता है बिल्कुल कहाँ पे था वो. ठीक है. So try to recall as much as you can. जितनी बार उसके रिकॉल करने की कोशिश किया करें. बहुत ज्यादा इनपुट काम नहीं देगा ना. हम ये बार बार आप लोग से कहते भी है टेस्ट में क्या है, इस डायरेक्शन वाला नहीं है. आपका ये दिमाग है, ठीक है ना, दिस इज योर ब्रेन. टेस्ट इज नॉट अबाउट दिस डायरेक्शन कि आप कितना पढ़ रहे हैं. इट इज बेसिकली अबाउट दिस, आप कितना आउटपुट दे पा रहे हैं, बाहर कितना निकल रहा है आपके दिमाग. ठीक है. तो भले ही कम जाए लेकिन वो जितना जाए उतना बाहर भी निकले, है ना. बाहर निकले इन द सेंस ऐसा नहीं बाहर निकल जाए बिल्कुल, है ना. यू शुड बी एबल टू राइट इट इन द एग्जामिनेशन. थर्ड लिखिएगा. फ्रॉम डायazonium salt. NH2. NaNO2 plus HCl will give you diazonium salt at 0 to 5 degrees Celsius. Then once you react this with water, you will get phenol. Raise your hand once you're done. Waiting for Khadija and Yahya. Fourth लिखिएगा. From cumin. In this we have benzene ring. पहले ना हम आपको बता रहे क्यूमीन क्या होता है. CH3 CH CH3 and here we have chlorine. Once you react this with AlCl3, Friedel-Crafts alkylation will happen and you will get benzene ring. Instead of chlorine, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा benzene ring. Instead of chlorine will be there. So here you will have CH. Here also CH3 and here also CH3. ठीक है. This is isopropyl benzene, also known as cumene. अब इस क्यूमीन से कैसे रिएक्शन होता है वो हम लोग को देखना है.
ऐसे बनाइएगा क्यूमीन को CH, here we have CH3 and here we have CH3. Once you react this with oxygen O2, the O2 will do a insertion reaction and it will get inserted between the CH bond like this. Now once you react this with H2O in the presence of H positive, you will get phenol plus CH3, C double bond O and CH3.